Today's topic is energy stored in a capacitor. Today we will study about the energy stored in a capacitor. As we know, what is capacitor? Capacitor is a device which is used to store charge. It is a device which is used to store charge. And you know, the capacitor is always consists of two parallel plates. One plate is connected with the positive potential of the battery and the other plate is connected with the negative terminal of the battery. That is why one plate, let's suppose the name of this plate is A and the other plate is B. So when the positive terminal of the battery is connected with the plate A, so it tries to fill that charge, that plate with the positive charges, okay, like this. And this negative potential gives the negative charges to this plate. And in the same way, this this capacitor will have a charge. So this is the basic definition of the capacitor. Now we are working about on the energy. Energy. What is energy? After that, the capacitor device or the storing, the capacitor is also the source of storing the electrical energy. This is the potential, positive potential, this is the negative potential, and we can say that this is the electrical potential. Okay. So the charge possessed by this plate is in terms of the electrical potential energy, because some work is done by this potential battery to store the charge on this plate. So some work has been done to store the charge on the plate. This is due to the fact that with each small increment of charge, let's suppose in the beginning the plate having a charge, suppose the number of charge is 1. After the increment of some potential difference, it contains some charge 2. And similarly here, if here we have 2 positive charges, then on the other plate there is a negative 2 charges. If here are 3, 4, then here the number of charges on negative plate and the positive plate should be same. So the battery is going to do some work to store the more number of charges. So if we are supposing that initially when the capacitor is uncharged, initially at start, this is the initial condition. When the capacitor is not connected or the switch is open, it is not connected with any battery, okay, so there is no charge, mean that voltage drop across this capacitor is 0. And when we apply the potential difference across this capacitor, it has a voltage, the value, some value V. Because it's connected with the potential difference V, so all the charges are stored on this plate. So when we are taking the average value, so that is equal to average value of the potential difference. Potential difference, that is equal to 0 plus V divided by 2. It means it is half V. So the average potential value is half V. So we can calculate the potential energy. The energy is equal to energy that is equal to half Q into V. Okay. Therefore, by using the relation, we know there is a relation that is Q is equal to CV
here using the relation Q is equal to CV. Okay, this is the basic relation. In the initial we have extracted this relation from the capacitor. For the capacitor, so the energy will be half. Here we have Q, here is V. So the value of Q is CV. By substituting the value of Q in term of CV, CV and then V, so we will get half CV square. So this is the energy stored. This is the energy stored in the capacitor. Okay. So it is also possible to regard the energy as being stored in the electrical field between the plates rather than the potential energy of the charges on the plate. Mean दो तरह की बातें हैं कि एक तो ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और कितना क्रिएट हो रहा है जितनी कि आपने यहाँ पर वैल्यू लगाई हुई है बैटरी की, ठीक है, उतना ही क्रिएट हो रहा है. तो इस तरह से भी हो सकता है. लेट्स सपोज कि आपने चार्ज यहाँ पे किसी तरीके से स्टोर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने वोल्टेज क्रिएट करके. नाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट वोल्टेज बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर. तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर, जितने ज़्यादा यहाँ चार्जेस होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे अक्रॉस दिस प्लेट. बात समझ आ रही है कि यहाँ में हमने शुरू में क्या किया कि एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, उस कैपेसिटर के इर्द गिर्द हमने एक बैटरी को लगा दिया. जैसे जैसे इसकी बैटरी के वोल्टेज बढ़ते जाएंगे वैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना. ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पर बढ़ते जाए, यहाँ इनिशियली जीरो होगा, जो जो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के हिसाब से इसके नंबर ऑफ चार्जेस इसमें बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर आप ये बैटरी नहीं लगाते, सपोज करें, तो अगर ये कैपेसिटर आप किसी तरीके से चार्ज कर लेते हैं, नो यू वांट टू मेजर द वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर by using the voltmeter. So by connecting this voltmeter you can take the value of the voltage across this. So we can get the relationship here, the relationship by using two equation, that is V is equal to ED. एक तो ये वाला रिलेशन इक्वेशन यूज करनी है और दूसरा आपने क्या करना है, C is equal to A. ये हमने जो निकाला था ना मीडियम और बगैर मीडियम के, ठीक है, कैपेसिटेंस विद मीडियम एंड विदाउट मीडियम. ये विद मीडियम है कि बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है. तो इसका मतलब है V और C की दोनों की वैल्यू आ गई. सो बाय यूजिंग दिस एनर्जी रिलेशन, हाफ C की वैल्यू यहाँ से लगाए A एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D C की जगह, और V की जगह आप गए ED यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द होल स्केयर. ओके, so by putting the values, the above equation become E is equal to half. By putting the value of C, that is A epsilon r epsilon naught divided by D, and the value of V, that is E D whole square. अब इसे खोलें, हाफ A epsilon r epsilon naught over D, and this is E square D square. So एक D से कट जाएगा, so you will get half A epsilon r epsilon naught E square D. So we know what is the volume. This is the area of the capacitor and this is the distance between the capacitor. D thickness of the capacitor, sorry. This is the thickness of the plate and A is the area of the plate. So by using these two parameters we can get the volume. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और यहाँ से A और D इन दोनों को इकट्ठा करें. So this become the volume. ठीक है,
तो अब आपके पास क्या आ गया, एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन गेट द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ओके। एनर्जी डेंसिटी मीन के दिस एनर्जी E divided by AD square, AD that is equal to half epsilon r epsilon naught and E square, okay. So this by this expression we can calculate the energy density that is equal to energy per unit volume. ये क्या है, E mean energy और AV क्या है, volume. So we can write the energy density like this, energy per unit volume, because AB is volume, A क्या है, that is area, ठीक है, और B क्या है, that is thickness. तो आपके पास पता है कि ये है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, that become volume. तो इस तरीके से ये आपका हो गया, ओके. So that is all about the energy stored in a capacitor. तो अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. क्या होता है कि देखिए, जो कैपेसिटर है हमें पता है कि ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है. चार्ज तो स्टोर कर रहा है, तो वो क्या स्टोर कर रहा है, बेसिकली वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो अब जब वो पोटेंशियल डिफरेंस को करेगा तो वी कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी, because we know that the potential energy is equal to half QV. So we have a value of Q in term of CV. उन्हें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज चूज किए, वो मैंने आपको पहले बताए. उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यू कैन गेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. थैंक यू वेरी मच.